अस्सलाम वालेकुम। Let's now get started. हेलो। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि स्टार्ट करेंगे, मैं कह रही हूँ आप देख रही हो, आप अभी आ गई हो ना, तो हाँ आ रही है। मेरी आवाज ठीक आ रही है? सही। एक मिनट, अभी अभी लाइव नहीं करना, थोड़ा सा सेट कर ले। मुझे बताओ यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं वो सब आ गए? ठीक है। हाँ आ रही है।
कशमाला कशमाला आप इधर हो? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Am I audible? Yes. Am I audible? Yes, Yes, yes. Kashmala. Assalamu alaikum. I'm Mala Azam, a third year medical student in RMU. Currently, I'm working as Vice President OHEC. Organization of Health and Economic Collaboration is a non-profit organization that aims to bridge the gap between medical and economical sectors of Pakistan, assessing the need that's imperative for development in Corona times. Dreaming for something big gives so many positive affirmations, but following its path asks for really huge sacrifices and patience. Achieving destiny is your day of triumph, but real struggle starts here. After a strenuous struggle on personal and social grounds, bearing the heat of heart shaking isolation among all the conspiracies and disloyalties, Allah opened our path to our birth cause, introduced us to incredibly motivating personalities, and we laid the foundation of OHSC on 23rd March 2021 under the supervision of Mr. Danish Ali, President OHSC, and together we entered the working grounds with the slogan of building lives with every step. Being precise, OHEC has in its foundation tireless efforts, enthusiasm, and selfless attitude of its family. And this is the sole reason OHEC is so successful in its mission right from the beginning, as intentions matter. We are here to establish trends of extraordinary human services, culminating all discriminations, and we also cordially invite individuals to be a part of our noble cause. Let's have a look over a few main projects of OHCC. Kindly share the slide, please. Okay, so talking briefly about our main projects,
we have different categories of projects like educational projects, welfare projects, research projects. The main one being our project USMLE, in which we conduct guidance sessions and assessment about USMLE exam. And our research series 2021 has also been completed, in which we conducted 3 webinars on research, and we will be proceeding with further sessions in the future, inshallah. We have done so many charity projects, welfare projects, with the most important one being our own personal website. Next slide, please. Team OHCC managed to develop a personal website at www.orghec.com in a short duration of less than just 2 months. On that website, we categorized data in a systemic manner from first year MBBS to final year MBBS. And we have also provided data regarding USMLE, PLAB, and all the international exam standards. If we can just have a look over the side, then kindly please share the screen. Okay, so uh, move to the resources, please. You can see that we have section data regarding USMLE, PLAB, MBBS, and application process. Moving towards MBBS, it's completely sectioned from first year to final year MBBS, but we'll have a look over first year data, as this session is about guidance of first year. Here you can see that we have provided all the books in the PDF form: anatomy, physiology, biochemistry. All the books are present here. You can download the books from here easily. Along with that, you can see notes folder. So these notes are basically first year notes of biochemistry and physiology made by our president, Danish Ali. He uploaded these on the website so that you can easily get benefit from these. They are a combination of lectures and book stuff. So if we do these notes, then it's more than enough to clear the exam, I guess. Moving back, we have also provided all the data regarding past papers. You can find UHS past papers here, RMU past papers, and past papers of different medical colleges and universities. Kindly open the video section. Here in the video section, you can see that we have provided all the dissection videos, Kaplan, anatomy, physiology. All the videos have been uploaded in a form of playlist, and you can easily access the data. It's properly sectioned so that you guys will not be having any problem in opening it and assessing it. Still, if you face any issue, you can contact us anytime. We are always here to help you and sort it out. Okay, one more thing I'd like to add, that because of COVID, we had some modules or some duration online studies. Regarding that, we at that time we used to have the LMS system, so we managed to compile all those online lectures of LMS, and we have provided those lectures for you on our website as well. You can easily access those. OSPE and Viva stuff, histology slides, like whatever you will be needing in your first year, you just need to visit www.orghec.com, and you can find it all under a single platform. I guess that's enough from the website. For further information, you can visit it yourself, and can contact us anytime.
We have seen few major projects with the website being the most important one. At this point, I must say that all this has been possible due to the relentless effort of our president, whose tireless endeavors introduced us to the unique aspect of life. So before proceeding further, I'd like to invite him to say a few words. Over to you, Danish bhai. Yes, you are. Thank you. Okay, so now we'll be proceeding towards our session. At this part, I'll just like to invite Jamila Api from final year MBBS to have a few words with you. Assalamu alaikum. This is Jamila Bibi from final year MBBS Rawalpindi Medical University. सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबने ज्वाइन किया और ये सेशन इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा देगा। एट द एंड आप बहुत सारी बातें सीख कर जाएंगे। तो ज़्यादातर तो इसमें वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी मेडिकल कॉलेजेस ज्वाइन किए हैं ना फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। तो इसमें जो चीज़ें आपको मैंने जिन चीज़ों पर मैंने बहुत स्ट्रेस से बात करनी है वो ये है कि एक तो ये मेडिकल का जर्नी एक डिफरेंट जर्नी होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर तो इसमें वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी आपने स्मार्ट स्टडी कैसे कॉलेजेस ज्वाइन किए हैं ना फर्स्ट ईयर ये है कि आपने रिसर्च कैसे स्टार्ट करनी है। जो चीज़ें आपको मैंने जिन चीज़ों पर मैंने बहुत स्ट्रेस को बात करनी है वो ये है कि एक तो ये मेडिकल का जर्नी एक डिफरेंट जर्नी होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर तो इसमें वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी आपने स्मार्ट स्टडी कैसे कॉलेजेस ज्वाइन किए हैं ना तो ये जर्नी है कि आपने रिसर्च कैसे स्टार्ट करनी है। जो चीज़ें आपको मैंने जिन चीज़ों पर मैंने बहुत स्ट्रेस को बात करनी है वो ये है कि एक तो ये मेडिकल का जर्नी एक डिफरेंट जर्नी होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर तो इसमें वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी आपने स्मार्ट स्टडी कैसे कॉलेज अगर आप उस स्टाइल में लेके चले जो आप एफएससी में करते हैं तो आपसे नहीं हो पाएगा। अगर आपका जो वे ऑफ लर्निंग है अगर वो ही रहा तो मे बी आपके लिए मुश्किल हो जाए। आपको थोड़ा सा ना अपने स्टाइल को चेंज करना होगा। दूसरा यानी कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। आपने देखना है कि कौन से पॉइंट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करनी है यहाँ पर आकर। दूसरा जो यहाँ पे एक मसला होता है एफएससी में आके फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आके वो पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। आप यहाँ पर आते हो इतने ज़्यादा टैलेंटेड इतने ज़्यादा एजुकेटेड तो नहीं कहना चाहिए हर कोई बहुत ज़्यादा
यहाँ पे टैलेंट बहुत ज्यादा है, बहुत हाई आईक्यू के लोग आपको मिलेंगे, उनको देख के परेशान नहीं होना। इवन अगर कोई मेरिट लिस्ट में आपसे बहुत ऊपर है, उस चीज की भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जो एमबीबीएस में आकर जो एक्चुअल स्टडी होती है ना, वो अक्सर वहां पे वो जो स्टूडेंट थे जो मेरिट लिस्ट में बहुत ज्यादा ऊपर थे, वो नीचे आ जाते हैं, और इवन नीचे के नंबरों वाले भी लोग ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पे ना मेडिकल की स्टडी बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। अगर आपने कॉन्सेप्चुअली स्टडी किया, अगर आपने स्मार्ट स्टडी किया ना, तो आपको कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। आपने पीयर प्रेशर से घबराना नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज के आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखो, आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हो, आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, तभी आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है। तो अपने पर कॉन्फिडेंस, मुकम्मल तौर पे आपने कॉन्फिडेंस रखना है, कि ये नहीं सोचना कि आप नहीं कर पाओगे। बहुत से लोग आपको ये कहेंगे कि उन्होंने नहीं पढ़ा, इस चीज का बिल्कुल भी आपने असर नहीं लेना। मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, ये मैं आपको बार बार कहूंगी कि इस चीज का आपने असर नहीं लेना यहाँ पर आकर। ये किस्म का कह सकते हैं कि एपिडेमिक चल रहा है मेडिकल इंस्टीट्यूशन में, कि हमने नहीं पढ़ा। देखो, डिफरेंट लोगों का की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी डिफरेंट होती है। कोई थोड़ा सा पढ़ने से भी पर बहुत अच्छे मार्क्स ले लेता है, कोई किसी को ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। तो आपने अपने हिसाब से देखना है, और कभी भी ऐसे लोगों की बातों में आके आपने स्टडी छोड़नी नहीं, ठीक है। और दूसरा ये कि चूंकि सिलेबस ज्यादा है, आप एकदम से परेशान हो जाएंगे। जो इस चीज का गुर है ना, वो ये है कि आपने कंटिन्यूअसली पढ़ना है, रोज पढ़ना है, चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़े, ठीक है। छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करें उस सारे सिलेबस को, उसको डेली पढ़ें, और स्मार्ट स्टडी करें, ठीक है। मैं स्मार्ट स्टडी पर बार बार स्ट्रेस देती हूँ कि आपने स्मार्ट स्टडी करनी है। अब देखो, स्मार्ट स्टडी होती क्या है? स्मार्ट स्टडी वो होती है जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपने सारी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ ली हो, सारे मेन इंपॉर्टेंट जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चीजें होती हैं, जो एक एक लेवल पे आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आपने पूरी कर ली हो, ठीक है। स्मार्ट स्टडी में आप अगर अगर आपकी आपने खुद को आइडेंटिफाई करना है, आपने सोचना है कि क्या आपकी वर्बल मेमोरी अच्छी है, क्या आपको सुन के अच्छा याद होता है, या आपको देख के याद, आपकी कौन सी वाली मेमोरी है। विजुअल मेमोरी अगर अच्छी है, तो आप यूट्यूब पे जाके जो एनिमेशन वीडियोस होते हैं वो देखें। फॉर एग्जाम्पल, एनाटॉमी के लिए एनिमेटेड वीडियोस देखें, आप एम्ब्रियोलॉजी के लिए एनिमेटेड वीडियोस देखें, आपको बहुत फायदा होगा। और दूसरा, मेडिकल कॉलेज में आपका जो ग्रुप डिस्कशंस और ग्रुप स्टडी होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डिस्कशन से मैं कहती हूँ जितना बंदा सीखता है ना, उतना तो लेक्चर्स में भी नहीं सीखता। आप लेक्चर्स लें, लाजमन लें, लेकिन आपने ग्रुप स्टडीज भी करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सी चीजें जब डिस्कस होती हैं, तो वो बहुत से पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। और एनाटॉमी के हवाले से मैं कहूंगी कि आपने मॉडल्स को बहुत ज्यादा देखना है। ये जो मॉडल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आप वो जो डायसेक्शंस होती हैं, कैडावर्स होते हैं, आपने उनको लाजमन देखना है, उससे आपकी मेमोरी बढ़ेगी। आपने एटलीस्ट से आपकी विजुअल मेमोरी बड़ी अच्छी बन जाएगी, ठीक है। अभी वो आपको बता भी देंगे। और देखो, जिस चीज के वो आपको बताएंगे कि कौन कौन से लेक्चर्स अच्छे होते हैं। डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स बहुत अच्छे होते हैं, आप वो सुन सकते हैं। आपके जो अपने क्लास के लेक्चर्स हैं, वो अपने मिस नहीं करने। एक इम्पोर्टेंट बात, देखो, यहाँ पर चूंकि सिलेबस ज्यादा होता है ना, तो आप सारा किसी अच्छी बुक से पढ़ें, जो कॉम्प्रिहेंसिव बुक हो, जो कॉन्सेप्चुअल बुक हो, और उससे सारे मेन मेन पॉइंट्स के ना नोट्स बना लें, ठीक है। अब स्टिकी नोट्स, फॉर एग्जांपल, आप एक पेज है ना जिसे आप पढ़ रहे हैं, आप उसके ऊपर एक स्टिकी नोट लगा दें। उस पेज में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लें, ताकि जब आप रिवाइज करें, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप पहले पढ़ेंगे, तो सारा पेज, सारा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में खुद बन जाएगा, ठीक है। ये जो नोट्स है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा फायदा दिया इन 5 सालों में, ठीक है। अच्छा, तो मैंने इम्पोर्टेंस की बात की थी, कैसे पता चलेगा कि इम्पोर्टेंट कौन से होते हैं? एक तो हर यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई ऐसी सोसाइटी होती है जिसने गाइडलाइंस प्रोवाइड की होती हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। एक तो वहां से पता चलता है, और दूसरा होता है पास्ट पेपर्स को आपने फॉलो करना है, ठीक है।
अब दूसरी बात है जिस पर मैंने बात करनी है वो रिसर्च है, ठीक है। रिसर्च पर मैंने क्यों बात की, इतने आप सोच होंगे कि इतने अभी तो हम कॉलेज में आए नहीं है और अभी से रिसर्च की बात करिए, ज्यादातर लोग फोर्थ फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर में जाके स्टार्ट करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दें, ठीक है। जो ही आप फर्स्ट ईयर में आए, आपने रिसर्च स्टार्ट कर देनी है। और ये मैं बता रही हूँ, इतनी मुश्किल चीज नहीं है। रिसर्च के नाम से आपको लगता है कि शायद कोई बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, आप नहीं कर पाओगे। अगर एक बंदा आपको बताए कि रिसर्च का पहला स्टेप ये होता है और स्टेप बाय स्टेप सारा बताया वो, सिर्फ आप सुनो बैठ के, तो आपको लगेगा रिसर्च बहुत मुश्किल है, आप नहीं कर पाओगे और फिर आप फर्स्ट स्टेप भी नहीं लेंगे। मैं ये कहती हूँ कि आपने एमबीबीएस में आने के बाद जो 2-3 दिनों के बाद जब आप सेटल हो जाओ, जो पहला काम करना है वो रिसर्च पे करना है, ठीक है। आपने आप कैसे करेंगे रिसर्च, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। हर यूनिवर्सिटी की कोई ना कोई रिसर्च सोसाइटी होती है। अगर रिसर्च सोसाइटी नहीं है, उसके बावजूद भी आप रिसर्च स्टार्ट कर सकते हो। आप गाइडेंस ले लो, आप दूसरे मेडिकल कॉलेजेस से कोलैबोरेट कर लो। और आपने करना क्या है, आपने इस लेवल पे एक टॉपिक सिलेक्ट करना है और आपने लिटरेचर रिव्यू करना है, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू कहाँ से करेंगे, आप नेट पे जाएं, गूगल स्कॉलर लिखें। गूगल स्कॉलर पे आपको बहुत से आर्टिकल्स मिलेंगे, आप उन आर्टिकल्स को पढ़ें। आपको बहुत ज्यादा आइडिया हो जाएगा कि एक रिसर्च कैसे की जाती है, रिसर्च में किन बातों को डिस्कस किया जाता है। इसी तरह आप पबमेड पे जाके आर्टिकल्स को पढ़ें और अपने लिए एटलीस्ट फर्स्ट ईयर के लेवल पे एक आर्टिकल सेलेक्ट, वो अपने लिए एक टॉपिक सेलेक्ट कर लें और सिनॉप्सिस लिख लें, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा गाइडेंस मिलेगी। बस सिर्फ आप रिसर्चर बनने की कोशिश करें, आपको बहुत ज्यादा गाइडेंस मिल जाएगी, आप जहाँ पे भी हो, ठीक है। स्टार्ट आपने खुद लेना है। अच्छा, तो मेडिकल की फील्ड में रिसर्च की क्या इम्पोर्टेंस है, मैं आपसे क्यों बार बार बात कर रही हूँ रिसर्च की। देखो, जो एक अच्छा रिसर्चर होता है वो एक अच्छा डॉक्टर होता है, और एक अच्छा डॉक्टर हमेशा एक अच्छा रिसर्चर होता है। देखो, आपकी अगर रिसर्च अच्छी होगी ना, आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आप एक अच्छे लेवल पे, आपको जहाँ पे भी जाओगे एमबीबीएस करके, जहाँ भी जाओगे, आपको एक आप एक अच्छे लेवल पे होगे, बेहतर लेवल पे होगे। आपको यूएसएमएलई प्लैब में यानी कि इसकी बहुत ज्यादा वेटेज होती है, ठीक है। कहीं भी आपने बाहर स्टडी करने जाना है। इसके अलावा इवन अपनी में भी आपको बहुत अच्छी पोस्ट पे पोस्ट मिल जाती है, सिर्फ इस बेसिस पे कि आपके रिसर्चेस कितने हैं, आपके आर्टिकल्स कितने हैं। दूसरा ये कि एक डॉक्टर जो रिसर्च ओरिएंटेड होता है, जिसने बहुत रिसर्च की होती है, उसका जो है सारी जो भी नई चीजें होती हैं उन पर नजर होती है, नई इंटरवेंशन, नए मेडिसिन, तो उसको प्रेफर किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज पे आपने काम करना है। दूसरा ये कि आपने फर्स्ट स्टेप लेना है, मैंने आपको बता दिया है। जो आखिरी बात, मैं बस थोड़ी सी बात करनी है, आखिरी बात स्ट्रेस कोपिंग पे, ठीक है। स्ट्रेस कोपिंग, मेडिकल की फील्ड में आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा मिल सकता है, सिलेबस की वजह से, पीयर प्रेशर की वजह से, और ये तो आपने इसको बहुत बर्डनाइज नहीं करना, ठीक है। आपने एक चिल एनवायरनमेंट में रह के पढ़ना है, फ्रेंड्स बनाए बहुत ज्यादा, हर चीज को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना, और इस चीज पर ध्यान नहीं देना अगर कोई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा। आपने अपना अपना जो है ना वो अपनी मेहनत मुसलसल करनी है, लगातार करनी है। अगर आप उसके साथ साथ पढ़ते रहेंगे ना, तो आपको फिर स्ट्रेस नहीं होगा। टाइम के साथ साथ आपने रोज पढ़ना है, ठीक है। और अगर आप किसी स्ट्रेस में पढ़ गए हो, अगर आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, आपसे पढ़ने नहीं हो रहा, किसी टीचर से कंसल्ट करें, किसी कोई भी सीनियर से अपने इश्यूज डिस्कस करें, अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें कि आपको किस चीज की प्रॉब्लम है, और फिर उस पर सोल्यूशन पे काम करें, ठीक है। और सही है, सही है। अब मैं यहीं पे बात खत्म करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। Thank you so much, Sohail Api. Okay, so now moving towards our next speaker, Serosh Ali Zaidi from FMDC. She will be guiding you about book selection. Over to you, Serosh Api. Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, you are. Please continue. Okay. My name is Sarosh Ali Zaidi and I'm fourth year student from FMDC, Federal Medical and Federal Medical Hospital कॉलेज से। ठीक है, तो आज हम आपको जैसे कि फर्स्ट ईयर का गाइडेंस सेशन है, तो हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से आप लोगों ने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। So I will introduce you to the standard books which you have to be studied in first year.
So first of all, anatomy. I'm moving towards the next slide, please. First subject is anatomy. ठीक है, तो anatomy का हम बताते हैं आपको कि किस तरह से anatomy की आपने बुक्स लेनी है और किस तरह से स्टडी को लेके चलना है. तो anatomy बेसिकली हमारे पास 4 पोर्शंस में डिवाइड होगी. जनरल एनाटमी है, हिस्टोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी है और ग्रॉस एनाटमी है. फॉर जनरल एनाटमी आप लईक हुसैन की बुक है, छोटी सी बुक होती है, वो यूज करेंगे. फॉर हिस्टोलॉजी आप लईक हुसैन या और डिफोरेज एटलस यूज करेंगे. देन कम्स टू एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी के लिए आपके पास KLM और लैंगमैन 2 बुक्स हैं. डिफरेंट कॉलेजेस डिफरेंट बुक्स रेफर करते हैं, तो आप लोग अपने कॉलेज के हिसाब से वो बुक आगे पढ़ेंगे. मोस्टली कॉलेजेस में, UHS के कॉलेजेस में KLM पढ़ाई जाती है, लेकिन लैंगमैन भी अच्छी बुक है, आप उसको भी देख सकते हैं. लास्ट इज मेन आपका जो है वो ग्रॉस एनाटमी का पोर्शन होता है. तो ग्रॉस एनाटमी में स्नेल्स एनाटमी है, KLM है, RJ लास्ट है, BD चौरसिया है एंड नेटर्स एटलस है. जो मेन बुक है जो ज्यादातर पढ़ाई जाती है वो स्नेल्स एनाटमी और KLM पढ़ाई जाती है. आप लोग जो बोन्स वगैरह पढ़ेंगे, बोन्स और मसल्स की अटैचमेंट्स हैं, उनके टेबल्स हैं, उसके लिए आप नेटर का एटलस यूज कर सकते हैं. उससे आपको पिक्चर मेमोरी अच्छी बनेगी. उसके अलावा BD में जो है वो उसके टेबल्स अच्छे बने हुए हैं, KLM में भी टेबल्स अच्छे बने हुए हैं. इसी तरह स्नेल्स में भी टेबल्स अच्छे हैं फॉर मसल्स अटैचमेंट. तो ये कॉलेज के हिसाब से है, आप जिस भी मेडिकल कॉलेज में हैं उस हिसाब से आप अपनी बुक्स यूज करेंगे. उसके अलावा आप ग्रॉस एनाटमी की वीडियोस देख सकते हैं जो कि मुख्तलिफ लोग रेफर करते हैं. तो वो आप लोग उसको देखेंगे तो आपकी जो एनाटमी है, ग्रॉस एनाटमी, वो बेहतर हो जाएगी. कमिंग टूवर्ड्स फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी में हमारे पास बुक्स जो हैं वो गाइटन एंड हॉल है, ज्ञानम शेरवुड, मिनी गाइटन और मुश्ताक है. मेन जो बुक कोर्स बुक है वो आपकी गाइटन एंड हॉल की है फिजियोलॉजी के लिए, तो आप लोग वही यूज करेंगे. मोस्टली UHS के कॉलेजेस में भी और अदर देन UHS भी गाइटन एंड हॉल पढ़ाई जाती है. MCQs की गाइटन एंड हॉल की रिव्यू बुक भी है, आप MCQs के लिए वो यूज कर सकते हैं. उसके अलावा एंड पे जब हम सिलेबस कर लेते हैं तो रिव्यू बुक हमारे पास फिरदौस की है, तो वो आप रिव्यूइंग के लिए फिरदौस यूज कर सकते हैं. उसके बाद आते हैं हम बायोकेमिस्ट्री पे. तो बायोकेमिस्ट्री जो है उसकी 2 ही मेन बुक्स हैं, जिसमें हमारे पास आती है लिपिनकॉर्ट एंड सेकंड इज सत्या. कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हम मुश्ताक में से भी कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री के, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज किस हिसाब से सिलेबस लेके चल रहा है, तो आप उसको इस हिसाब से देखेंगे. मेन बुक लिपिनकॉर्ट ही है और सत्या है. तो ये हो गई कुछ बुक्स की डिस्ट्रीब्यूशन. उसके अलावा आप लोग जो हैं वो जो मेडिकल की पढ़ाई है वो बेसिकली कंसेप्चुअल भी है, तो आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे तो बुक्स पढ़ना आसान रहेगा. तो आप उसके लिए मुख्तलिफ वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो डॉक्टर नजीब की वीडियोस आ जाती हैं, ज्यादातर लोग वही यूज करते हैं. तो उसके अलावा मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ सजेस्ट करते हैं, ऑस्मोसिस की है, एम्बोस की हैं, डिफरेंट हमारे पास जो है ना वो नेट पे अवेलेबल होती हैं वीडियोस. तो मोस्टली जो यूज की जाती है वो डॉक्टर नजीब की जा सकती है, तो आप लोग भी वो देख सकते हैं. बाकी ये कि डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज किस हिसाब से आपको पढ़ा रहा है और किस तरह से आपको लेके चल रहा है, तो उस हिसाब से आप बुक्स अपनी लेंगे और आगे पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे. मेजर बुक्स जो थी वो यही थी जो हमने आप लोगों को बताई हैं. सो हैंड ओवर टू यू पशमाला. Okay, thank you so much, Ape. Okay, next we have Mehrusa from High Tech. So over to you, Mehrusa. Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, you are audible. First of all, welcome to all of you from the medical community. फर्स्ट में हमारे पास आता ही है कि हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जब आते हैं तो उनको पता नहीं होता फर्स्ट की बुक्स कौन सी पढ़नी है, सेकंड उनको पता नहीं होता कि हम लोगों ने पढ़ना कैसे है. तो इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे कि MBBS की स्टडीज को बेसिकली जैसे भी आप डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस कहीं भी आपको नाम सुनने को मिला होगा कि हम मॉड्यूलर सिस्टम है भाई, कहीं भी आपको ट्रेडिशनल सिस्टम का मिला होगा. तो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी कि आपको कन्वेंशनल सिस्टम में कैसे पढ़ाया जाता है. जैसे कि नम्स के मेडिकल कॉलेजेस है वहाँ पे कन्वेंशनल सिस्टम चलता है, UHS के डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में कन्वेंशनल सिस्टम चलता है. तो बेसिकली अब हम देखते हैं कि कन्वेंशनल सिस्टम है क्या. अब MBBS में हम लोग 5 years में फर्स्ट 2 years हैं. फर्स्ट ईयर जैसे आप आते हैं तो हम आपको बेसिक साइंसेस पढ़ाते हैं कि आप लोगों को नॉर्मल एनाटमी पता होनी चाहिए, नॉर्मल फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए, या फिर नॉर्मल बायोकेम पता होनी चाहिए, नॉर्मल फंक्शनल पता हो जाए.
पता होने चाहिए स्टूडेंट्स को। तो इसमें हम लोग ट्रेडिशनल सिस्टम में देखते हैं कि ट्रेडिशनल सिस्टम होता क्या है। इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कन्वेंशनल सिस्टम, ये एक आपको डिफरेंट जो बुक्स होती हैं, आप लोगों के पास बेसिक 3 सब्जेक्ट्स हैं, इनका 3 सब्जेक्ट्स का पेपर डिफरेंट बनता है और आप लोगों को सेपरेटली इंडिपेंडेंटली एक एग्जाम में एक प्रॉपर सब्जेक्ट का पेपर आता है। आप लोगों में इसमें डिफरेंट मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जैसे कि अगर मैं एनाटमी ले लूँ तो वहाँ पे एनाटमी के आपके पास 4 सब डिवीजन है, लेकिन आपका पेपर एक ही आता है। उस पेपर में आपके पास 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो उसमें आप लोगों को डिवीजन बताई जाएगी कि आपका एग्जाम ओरिएंटेड पेपर कैसे होता है। नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम एग्जाम्स की बात करें तो आपके जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, ईच सब्जेक्ट का आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें 2 सब्जेक्ट की डिवीजन होती है। एक थ्योरी पेपर आ जाता है आपका और एक प्रैक्टिकल आता है। थ्योरी पेपर में आपके 100 मार्क्स होते हैं, 1 सब्जेक्ट के अगर हम लें तो 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट होते हैं। इंटरनल असेसमेंट मींस आपके ब्लॉक्स आ जाते हैं या फिर आपके सब स्टेजेस, वाइवास टेस्ट, क्लास टेस्ट जितने भी होते हैं, उनमें मिला के आपको 10% की वेटेज होती है। बाकी 90% होते हैं, इसमें आपके 50% मार्क्स काउंट होते हैं कि आपके एमसीक्यूज के और 50% मार्क्स होते हैं सॉल्व शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस के। प्रैक्टिकल पेपर भी ऐसे होते हैं। प्रैक्टिकल में आप लोगों के पास ये एक आई थिंक आप लोगों के मार्क्स गेनिंग करने का ये एक अच्छा तरीका है कि आपके 90 मार्क्स होते हैं, तो 90 मार्क्स में जो ऑस्की और प्रैक्टिकल होते हैं वो उसके 50 मार्क्स होते हैं और वाइवा के 40 मार्क्स होते हैं और 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट में आते हैं। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि आपको नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, कि आपको पढ़ना कैसे है, अगर और किस तरह पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं खुद अपनी बात करूं, जब मेडिकल कॉलेज में आई थी तो इवन कि मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं बुक्स पढूं या वीडियो लेक्चर्स देखूं, और अगर मैं बुक्स पढूं तो मैं कैसे पढूं। तो हम लोगों का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप फर्स्ट आए हैं, आप लोगों ने किस तरह करना है कि आप लोगों ने स्टडी के लिए सबसे पहले वीडियो लेक्चर सुनने हैं। इससे आपका होगा क्या कि जब आप वीडियो लेक्चर सुनेंगे ना तो उसमें आप लोगों को जो आपके फर्स्ट में अभी ये एक रूल याद रखें, जो इंसान अच्छा सुन सकता है वही अच्छा बोल सकता है और जो अच्छा पढ़ता है वही लिख सकता है। अगर हम देखें कि वीडियो लेक्चर्स हमारे लिए क्यों जरूरत है, वो आपको ना बुक रीडिंग का एक तरीका बताएंगे कि वहाँ पे आपको बुक रीडिंग के लिए ईजी होगा। सेकेंड बात है कि आप लोगों के पास नेक्स्ट स्लाइड करें। अच्छा, वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए बुक की लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसमें डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स आते हैं। आपके एनाटमी के लिए अलग होंगे, फिजियोलॉजी के लिए अलग होंगे और बायोकेम के लिए अलग होंगे। लेकिन जो मेजर वीडियो लेक्चर्स हैं डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स के, वो मैं बता देती हूँ आपको कि जो एमजीएस लेक्चर्स हैं ये आपको बहुत अच्छे फिजियोलॉजी कवर करवा देती है। लाइक फिजियोलॉजी की अगर आपने गाइडेंस पढ़नी है ना तो आप इनसे कर सकते हैं और ये आपको ईच एंड एवरी लाइन आपको एक्सप्लेन करेंगे। एनाटमी के लिए तो आप लोग मॉडल्स की वीडियोस देखें, वहाँ पे एक एनाटमी एकेडमी चैनल आता है, वो बहुत अच्छा करवाता है। और ये इसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप फॉरेनर्स की वीडियोस देखिए एनाटमी के लिए, बिकॉज वहाँ के मॉडल्स बहुत प्यारे होते हैं, तो वो वहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत अच्छा लगेगा। और बायोकेम के लिए डिफरेंट यूट्यूब चैनल है, ब्रेनलेस का बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप लोगों ने एक बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है और फुल अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो उनके लिए डॉक्टर नजीब बेस्ट है। आप लोगों ने करना है कि सबसे पहले एक वीडियो लेक्चर देखते हैं, उसके बाद आपने क्या करना है कि बुक पढ़नी है। अब हमें नहीं पता होता कि हम बुक कैसे पढ़ें। हमने वीडियो लेक्चर सुना, उसके बाद हमने बुक उठाई, हमने बुक का वो जो टॉपिक सुना होगा ना वो नहीं पढ़ना है। आप लोगों ने एक दफा पढ़ना है, सेकंड टाइम आपने हाईलाइटर्स यूज करने हैं, मेन पॉइंट्स आप लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लेना फ्रॉम द टॉपिक। नेक्स्ट स्लाइड करें। अच्छा, बुक रीडिंग का आप लोग कैसे करते हैं। अगर मैं फिजियोलॉजी की बात करूं तो फिजियोलॉजी की में आप, ये एक नॉवल है। अगर आप लोग जो बच्चे बहुत ज्यादा नॉवेल्स पढ़ते हैं उनको बहुत मजा आएगा फिजियो पढ़ने में, बिकॉज फिजियो एक स्टोरी की तरह आपको लगती है। अगर आप एक चैप्टर पढ़ते हो ना तो वो आपको लगता है कि आपको स्टोरी पढ़ रहे हो। आप उसको बेसिकली कॉन्सेप्चुअल स्टडी होती है कि आपने एक टॉपिक पहले आपने वीडियो देखी, उसके बाद आपने वही टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक के अंदर से मेन पॉइंट एक्सट्रैक्ट करके आपने स्टिकी नोट्स यूज कर लेने। उसमें आप लोग डिफरेंट फ्लो चार्ट्स बनाइए या हाईलाइटर यूज करिए डिफरेंट पॉइंट्स के लिए। तो और अपनी शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। शॉर्ट लिस्टिंग आप लोगों को एंड टाइम में बहुत फायदा देगी। और शॉर्ट लिस्टिंग आप लोगों ने ज्यादा प्रीफर करें कि आप बुक पे करें। बुक जैसे कि मैंने अपनी एग्जांपल ली हुई है, ये मेरी बुक है, तो मैंने ये शॉर्ट लिस्टिंग जितनी भी अपनी फिजियो की थी वो बुक पे की थी और एट द एंड मुझे बहुत फायदा हुआ था इसका। इवन कि आप लोग विद इन 5 to 6 साल पे आप सारी फिजियोलॉजी कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग बता सकते हैं एट द एंड।
Okay. Thank you so much, Merusa. So now we'll be moving towards a bit intro of modular system, and for that we have Dr. Umaima here with us. She is modular coordinator at in Rawalpindi Medical University. Thank you so much, ma'am, for your precious time, and we'll like to hear a few words from you about modular system. Over to you. Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, ma'am, you are. Okay. First of all, I would like to welcome all the students to first year MBBS. I guess we have from all the medical colleges or only from RMU? We have students only from RMU or we have from all other medical colleges as well? Ma'am, from other medical colleges as well. Okay, good. So most of you are getting admissions into the medical colleges who are dealing with a modular system or just the conventional system as well. Anyway, no issues. Whether it is a modular system or a conventional system, बेटा बात ये है कि पढ़ना तो आप लोगों ने है जैसा कि आप लोगों के सीनियर्स ने अभी आप लोगों को गाइड किया है रिगार्डिंग अभी जैसे मीला बीबी ने बोला कि जो पढ़ाई है कैसे करनी है स्ट्रेस कूपिंग कैसे करनी है मैं छोटा सा बिल्कुल बहुत छोटा सा इंट्रो दूंगी क्योंकि डेफिनेटली आप लोगों के लिए थोड़ा बोरिंग हो जाएगा बेटा कन्वेंशनल पढ़ना है या मॉड्यूलर पढ़ना है बात पढ़ाई की है आपकी लगन की है आपके टाइम और मोटिवेशन की है you are being blessed to be chosen amongst 40,000 to 70,000 students who basically opted who had the dream of becoming a doctor and you guys are blessed being chosen for it ठीक है you got admission in the medical college and top most prestigious institutions of Pakistan so feel blessed for it अपने आप को समझो कि अल्लाह ताला ने आप लोगों पे खुसूसी करम किया है अल्लाह ताला ने चुना है आप लोगों को इस डॉक्टर बनने के लिए और रिगार्डिंग राजौरी मेडिकल यूनिवर्सिटी तो आप लोगों के इंशाल्लाह मुलाकात होगी जब वाइस चांसलर के साथ तो आज ही वाइस चांसलर साहब एक बात कह रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उमर बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की कि डॉक्टरी वो वाहिद पेशा है जिसमें आपको दो एजेस मिलते हैं सबसे पहले तो ये है कि आप जो आपका एक मतलब डेफिनेटली हम सब इसी इरादे से आते हैं कि हम इंसानियत की खिदमत करेंगे लेकिन इंसानियत की खिदमत के साथ साथ हमारा मोटिव ये भी होता है कि हमें एक अच्छी सैलरी भी मिलेगी माशरे में एक अच्छा मकाम मिलेगा डॉक्टर्स को इज्जत मिलती है बेटा डॉक्टर दो तरह से ब्लेस्ड है पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे लेकिन जब आप मरीज को ट्रीट करते हैं उसको जब आप अच्छे अल्फाज से उसको समझाते हैं उसकी बीमारी के बारे में बताते हैं तो आपको जब वो दुआएं देता है ना ट्रीट होने के बाद उसकी जब वो आप तकलीफ दूर करते हैं चाहे वो अल्फाज से दूर हो जाए और चाहे वो दवाई से दूर हो जाए वो जो दुआएं मिलती हैं ना उसका कोई मोल नहीं होता उस दैट इज प्रेशियस ठीक है और आपकी जिंदगी में बाज दफा वो दुआएं ऐसे रास्ते खोलती है कि जो आपकी सोच में भी नहीं होते कि वो अल्लाह ताला ने कहाँ से आपके लिए रास्ता बनाया ठीक है इनिशियली मैं थोड़ी सी गुफ्तगू इसलिए कर रही हूँ मॉड्यूलर सिस्टम पढ़ाई ये चीजें तो बेटा साथ साथ चलती हैं थोड़ी सी चीजें जो हैं जो आप लोगों को एज बीइंग अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो आप लोगों को मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता सारी टीचर्स बार बार बताएंगे लेकिन आप लोगों के जहन में इसलिए भी पहले से होनी चाहिए कि बाज दफा थोड़े से मिसगाइड हो जाते हैं आप लोग तो बेटा जब भी आप क्लास में बैठे हों आप ग्राउंड के अंदर हो आप अपने सीनियर से बात कर रहे हो आप टीचर से बात कर रहे हो आप कहीं पर भी हो आपकी हर बॉडी लैंग्वेज से पता चलना चाहिए कि यू आर द ब्लेस्ड वंस ठीक है इतनी अच्छी गुफ्तगू करें इतना अच्छा अपने आप को कैरी करें बेशक आपको बहुत सारे लोग इस चीज को इन्फ्लुएंस करेंगे हाँ जी आप तो ऐसे हैं आपको ऐसे होना चाहिए नहीं ये तो मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे यूनिवर्सिटी है आप यहाँ पे फ्री होके चलें आप फ्री गुफ्तगू करें जरूर करें लेकिन अपने हदूद और कयूद का बहुत ध्यान रखें बेटा एक बात याद रखिएगा जिस वक्त आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं ना कि यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट तो हर बंदा हसरत की निगाह से देखता है आपको एक दफा जरूर एक दफा आपको देखता है कि माशाल्लाह देखें ये वो लोग हैं जो क्रीम ऑफ नेशन कहलाते हैं तो बेटा क्रीम ऑफ द नेशन शुड बी प्रूविंग हिम और हर सेल्फ एज अ क्रीम ठीक है ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप में और एक आम बंदे में फर्क बहुत वाज़ेह नजर आना चाहिए
पेशेंट की आधी बीमारी आपकी गुफ्तगू से ही ठीक हो जाती है, ये मेरा मानना है और मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग इस बात से अग्री करेंगे। लेकिन अगर आप की वही रूटीन में लैंग्वेज रहेगी, आप रूटीन में ही पेशेंट के साथ डील करेंगे, जैसे हंसी मजाक आप लोग अपने क्लासरूम्स में कर रहे हैं, जैसे हंसी मजाक आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ ग्राउंड में कर रहे हैं, वही एटीट्यूड अगर आप लेकर पेशेंट के पास जाएंगे तो बेटा बिलीव यू मी कि आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। ठीक है, सो ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर द ब्लेस्ड वंस. Coming out to the modular system, yes, alhamdulillah, under being now as a university, and before we were attached with the University of Health Sciences as well, we are the first medical university of the government sector who has introduced modular system. ठीक है, मॉड्यूलर सिस्टम क्या है बेसिकली आप लोगों को थोड़ा बहुत शायद आइडिया होगा कि जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, आपके जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एनाटमी है, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, सो पहले ये होता था कन्वेंशनल सिस्टम में, अभी भी ऐसा हो रहा है कि हर कोई अपने अपने डोमेन में पढ़ा रहा है। मॉड्यूलर सिस्टम में बेसिकली आप लोग सिस्टम्स को कंबाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपर आर्म की बात करें, अपर जिसको हम एनाटमी में अपर लिम कहते हैं, ठीक है, तो अगर हम अपर आर्म की बात करें तो अपर आर्म की जो आप एनाटमी पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड जो उसी में जो चीजें और होंगी उसी की फिजियोलॉजी आप पढ़ेंगे, और उसी में जो सिस्टम्स और चल रहे हैं उसी की आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, यानी कि एक ही सिस्टम की आप सारी चीजें पढ़ेंगे। इसी के अंदर फिर आप उसी की मेडिसिन पढ़ेंगे, उसी की सर्जरी भी पढ़ेंगे। कि अगर इसमें कोई बीमारी है, एनाटमी है, अप्लाइड एनाटमी है, ठीक है, आपने उसमें पढ़ लिया कि जी ये वेन फलानी जगह से फलानी जगह तक जाती है, ये मसल फलानी जगह से फलानी जगह तक जाता है, लेकिन अगर उस मसल में कोई मसला आ गया है तो उसको ट्रीट कैसे करना है वो भी आपको वहीं पे पता चल जाएगा। इंस्टेड कि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में सिर्फ थ्योरी पढ़ते और थर्ड ईयर में जाके आप लोग क्लिनिकल में जाते, फिर आपको पता चलता अच्छा ये तो वो चीज थी जो हमने वहां पढ़ी थी और फिर हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो बेटा जानी ऐसा नहीं होगा, ये आप लोग साथ साथ ही उसी की मेडिसिन उसी की सर्जरी पढ़ोगे। पढ़ना कैसे है ये आपके सीनियर्स ने आपको बताया है। मेरा मशवरा आपको बहुत मुखलिसाना ये है कि जो है 90% you will capture and you will gather from the lectures which are being taught by the teachers. Take the lectures very seriously. जब एक दफा लेक्चर सुन लोगे ना, घर जाके एक दफा सिर्फ उसकी रीडिंग करोगे, जो 50% गेन आपको लेक्चर में होगा वो 50% घर आके एक दफा पढ़ने से काफी हद तक आपको वो लेक्चर समझ आ चुका होगा। और मेरा जो कि मेडिकल एजुकेशनिस्ट भी कहते हैं, आई एम बीइंग द असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एज वेल एंड मेडिकल एजुकेशनिस्ट एज वेल, आई विल सजेस्ट यू गाइज कि अगले दिन सुबह आके आपको क्लास से पहले 5-10 मिनट मिलते हैं, नहीं तो क्लास के एंड पे 10 मिनट जो 15 मिनट मिलते हैं, या क्लास खत्म होने के बाद या सारे दिन के कॉलेज खत्म होने के बाद कभी ना कभी आपको बीच में 15-20 मिनट 25 मिनट का टाइम मिलेगा। बेटा अपना ग्रुप बनाएं, फ्रेंड्स बनाएं और टॉपिक्स डिस्कस करें। आपको पीबीएल्स होंगे, डेफिनेटली स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस होंगी, आपकी केस बेस्ड लर्निंग्स होंगी सॉरी प्लीज एक्सक्यूज मी। तो वो आप लोगों ने लाजमी तौर पे एक दूसरे से डिस्कशन जरूर करनी है। जितनी चीजें आप डिस्कस करके आप लोगों को समझ आएंगी उतनी शायद अकेले बैठ के पढ़ने से नहीं समझ आएंगी। ठीक है, एक तो ये हो गया मॉड्यूलर सिस्टम। मॉड्यूलर सिस्टम में जो खूबसूरती है वो ये है कि आपके हर क्लास में, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर में आप लोगों के 3-3 ब्लॉक्स चलेंगे। ठीक है, ब्लॉक्स में ये है कि हर ब्लॉक के अंदर 2 मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, और जो ब्लॉक 1 है उसके अंदर 2 मॉड्यूल्स हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में है फाउंडेशन मॉड्यूल है, मस्कुलर स्केलेटन है, फिर इसी तरह ब्लॉक 2 में आपके पास MSK2 आ जाएगा, ब्लड मॉड्यूल आ जाएगा, CBS एस्पिरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ब्लॉक्स का आपका, और एंड ऑफ मॉड्यूल आप लोगों का एक एंड ऑफ मॉड्यूल एग्जाम होगा, और ब्लॉक के एंड पे एंड ऑफ ब्लॉक एग्जाम होगा जिसमें आपकी ऑस्पी भी शामिल होगी, आपका मोस्ट लाइकली वाइवा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो टीचर उस वक्त क्या डिसाइड करते हैं। सो बेटा पढ़ाई साथ साथ करनी है, काम साथ साथ करना है, रोज का रोज अगर आप करेंगे, ठीक है, अपने आप को जरूर मौका दें एंटरटेनमेंट करने, लेकिन जो है आपने जो काम करना है और पढ़ाई करनी है वो तो डेफिनेटली साथ साथ करनी है। रिगार्डिंग एनी क्वेरीज
Dr. Sidra, the modular coordinator for first year, second year, she is available 24/7. I, being the modular coordinator of third year, fourth year, and final year, I'm available 24/7. So you guys, even first year, if you have any problem and you want to share it with somebody, you are 110% most welcome to us. I told you that I am always available. Your seniors know that they have my phone numbers. I am always available for everybody. So if there is any kind of query regarding anything, you can come to us. Our doors are open for everybody. Okay? So thank you so much. Thank you, Kashmala. Thank you Handing so over much, to you. ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay, so now we have our special guest, Dr. Sohail Aman from USA, here in the meeting. So I welcome you, sir, and thank you so much for your precious time. We are really grateful and honored to have you here. I'll just like you to say a few words about USMLE and how important it is for a first year medical student if he wants to go abroad and give the USMLE exam, then when should he start the preparation, and share a few words about your experience, your journey to US with us. Thank you so much, Kashmala. And Assalamu alaikum, everyone. Um, Actually, my journey to USA was a quite difficult one. Uh, when I graduated, we don't have like such guidance like you guys are providing to your juniors. I mean, this is really unprecedented. You guys are doing a really marvelous job, and the new first year should be very thankful to the seniors. Um, the way you are guiding, it's really saving their precious time and the hard work that they have to do for the coming 5 years. Um, what I would advise at this stage to all the first years, the new first years, is that make up your mind first. Make up your mind. Uh, at the end of first year, you should know what you want to do. That's really important. Whether you want to come to USA, or you want to stay in Pakistan, or you want to go to UK, or you have some other preferences, priorities, you want to go to Dubai. Um, so first of all, just sit back, talk to your family, and look at your resources, and then you should be able to decide. Once you decide, then stick to it. And if you have chosen the pathway of USMLE, say you wanted to come to USA, then right from the beginning, start uh, studying the USA books. Trust me, the American system is quite different from UK system. Uh, so if you want to attempt USMLE or step one, maybe uh, like if you are reading anatomy or you are reading physiology, try to read the American book and try to attempt the American USMLE MCQs. Why I'm saying that is because once you attempt the USA questions, it would be a lot easier for you to do the MBBS as well. So don't worry that you cannot do MBBS. You can do MBBS, but USML is quite harder. It's quite difficult than MBBS. So you can shot two birds in one shot. But the thing is, it's very important um, that you should decide now. So by the end of final year, once you have 5 years, you have done your step one and step two, and you are ready to come to USA. So that would be um quite beneficial. And try to make study groups. This is really important. Try to join your students who are looking for USMLE. Join hands and start doing questions.
make groups so that you should have the same study pattern. And say if you are reading medicine, then try to read from Currents or from any American author. Please do not read PJ Kumar or UK books. It's not going to help you. And the reason why I'm saying that we tried that, we have no guidance, and we were uh, reading UK books, and we suffered. We really suffered during our exams because we didn't know how to study in those days. And I'm talking about pre-internet era. Uh, Now you have all the guidance, and you have internet available. You have all the information. So so and then when I did my USMLE, we did not have center in Islamabad. So basically, we went to Bangkok to do our step one, and then I went again to Bangkok to get my step two, and then we had to come here. After that, we did some research and attachments, and then we got the interviews and residency. So it was quite a hard journey for me, but I think if you can do it by the time you finish your final year, uh, it will be a really blessing because you can save your year of graduation. They really look into your year of graduation. When did you do your USMLE after graduating? So if you have done it within like 1 year, you will. There are chances that 95% chances that you will get residency plus good scores. So it will be assured. And plus, you once you come to USA, then you are competing with uh, at the international level. You will be competing with the Indian medical students. You will be competing with Philippines, Mexico, all over the world. You will be competing at this level. So you can well imagine. It's gonna be a little hard. So start preparing now. So you have 5 years. Any questions, please let me know. I would be happy to answer. Okay, thank you so much, sir, for your time. Moving towards the question, someone asked that you said they should opt for books that are studied in US and they should not study the local books. So they are asking that how to manage time to study both books at the same time. No, you don't have to read the local books. If you study USA books, you can easily pass MBBS by studying the US books. So don't start studying local books and the USA books. If you want to come to USA, just read the USA books. Okay. Next, we have a question that how important is research for getting a residency in US or for clearing USMLE? It is quite important if you do not have good scores. But if you get good scores and your year of graduation is like say you have done within 1 year of your graduation, then of course research doesn't matter that much. So first of all, you need to have good scores, and second, your year of graduation should be within 1 year. Okay, someone asked, isn't it possible to get residency in surgery? Because we heard from some people that surgery residency is difficult to opt there. Mostly people go for internal medicine. But nothing is impossible. We have Pakistani residents in who are in surgery as well, and of course in other fields. But just keep in mind that they would first prefer their American medical students who are being trained here and they have studied here. They would get the first preference, and then you will come second unless you have really really very high scores and you can compete with the medical graduates here. uh,
Yes, if you're exceptional, they will take you, but otherwise they will take the American students first. Okay, sir. Can step one be attempted in third year MBBS? Of course, yes. You have 3 years and you can study, but you have to study from right from day one. आप पहले दिन से पढ़ोगे तो then you can attempt, because you need to get good scores. Or same medical students, they do here, they attempt your step one in third year in America as well, and by the time they finish final year, so make sure that you can do both steps in 5 years, and 5 years is a lot of time. And just get the your group study, make groups who can do the USMLE, sit together, do the questions. Questions are very important. MCQs are really important. They will make your concept. अगर आप खाली books पढ़ोगे तो you gonna miss lot of things. So what I would suggest कि जब आप कोई topic पढ़ो, and start doing the questions, MCQs, right from the day one, so that it can sharpen your skill. आपने question attempt कैसे करना है, and how you gonna answer the question is very important. और वो आपको concept आएगा MCQs करने से. So just do lot of American based MCQs, ठीक है, and then it won't be a problem. And plus you have time. सबसे बड़ी problem time की होती है. You have 5 years. So if you plan now, so I don't think it would be any problem. You can finish your steps in 5 years easily. Okay. So next we have a question that now step one is all a pass fail criteria. So marks doesn't matter in step one. Then which additional factors will improve our CV for residency or Step two, and don't have any attempts. Should pass in first attempt. Even if it's a pass fail, don't think it's going to be easy. They may have increased your scores. तो अभी जो पास फेल हो सकता है वो हाई स्कोर पे वो पास फेल रखा हो. तो जैसे आपके यूके का एग्जाम होता है वहाँ पे पास फेल होता है, उनका वो स्कोर्स पर उनके नहीं होते, या तो इसलिए डोंट टेक इट इजी. हमेशा इसको सीरियसली लें और वैसा ही पढ़ें जैसे यू वांट टू डू 100% स्कोर. okay. So next we have a question that matching is not our choice. So is there any preference we can have for residency? If yes, then what's the priority of placing residents? Like highest scorers go in which field? Well, matching is your choice. You rank the list. If you have 5 interviews, of course you're gonna rank which one would be your first choice, second, third, fourth. So then the program will rank you as well. So both rank each other. It will be your choice first. उसके बाद ये कि you can always, if you're in USA, you can always do a research, or you can talk to the programs and do the attachment there. So there are ways, other ways too. If you are not matched, or um, you can do other, you can do MPH here. You can do. There's so many other pathways you can join. So it's not necessarily that matching is the only way to get residency. Okay, sir. Next, we have a question that how to assess online USMLE resources for study, and is USMLE expensive? Well, how to assess would be your question. You can guide them how to assess the resources. Of course, you can have all USMLE World and all the good MCQ based pools. I should say get some students from Aga Khan University as well, and see what they are studying, what is their question pool. That is very important. If you can get question pools, because they always get good scores, so it will help you. And like I said, combined study is the way to go. I've seen all the students in King Edward,
They sit in a library, all the group, and then they study together. So it will really help you, and it will kind of make your life easy. You don't have to study alone. It will be very difficult. So make a group and have a group study. Second, expensive. Yes, the exam is expensive. I think one step cost like $800 something. But once you pass it and once you get the job, then uh, the return is quite satisfactory. So if you get a job and residency, then it's not expensive. Okay, so next we have a question that as EFMG is being dismissed and a new organization is being set and Pakistan is not recognized, so is there a chance that we might not be able to take step one after 2024? No, it's not like that. They will do it. Don't worry. Still 2 3 years to go. So your job is to study, and you will and just attempt exams. Okay, so next we have a question that should PLAB be preferred or USMLE should be preferred? Like, which one is having a greater scope? Well, it depends on your family and yourself which way you want to go. Um, I think my opinion might be biased, but I say USMLE has a better scope. Um, PLAB is really difficult, and with PLAB, people have start coming back. And as compared to UK, I think USA has a better choice regarding the lifestyle, the practice, the money, everything is better here in USA. Okay. So next we have the question that what's the scope or importance of Pakistan's medical degree in foreign countries? You have to pass their foreign country exam. MBBS is not recognized everywhere. Okay. Someone asked that if we want to study for USMLE right from the start, then as a first year medical student, which books should we study? USA books. You can take Currents series. Currents is a great book. And I should say start studying with the MCQ based learning. Uh, Try to do an MCQ and then see, uh, attempt the answer and then go back to that chapter or that topic. Say you are having a heart failure question. So just try to attempt the question and see whether you know it or you don't know it. Then go back and try to read that specific topic from the book, from USA book. You can consult Harrison, you can consult Current series, um, Lippincott series. There are so many series here that you can choose. There's not one book. So yeah, but don't go for the UK books. No PJ Kumar, no Davidson. It will not help you. Okay, so next we have a question regarding electives that how important electives are regarding USMLE journey. They are very important, but first of all, you need to get good scores. That's more important. So try to study for 5 years. Get step one and step two. Once you have good scores, they will. The program director will automatically will invite you for electives. Once he sees good scores, they say you have a potential. You have a good academic performance. Then it's just getting acquainted to the USA system. But the most important thing they're gonna look at is are your scores, especially that step two score, since step one is pass fail now, and your year of graduation. Okay, so we have a question that can we get jobs in USA or other countries without giving USMLE? Not the doctor's job. You won't get. You have to get medical licensing exam. You may get other jobs, and now since USA is opening up, you may get a job if you passed your USMLE.
You may get a job as an assistant doctor. Without residency, you can get a job as well. But without USMLE, you will not find a healthcare job. You may have some other jobs, but not in the medical field. Okay, and then how can how do you see doing FCPS or USMLE? Like which one should we prefer? It's your choice. If you want to stay in Pakistan, then do FCPS. If you want to come to America, then there's no value of FCPS. Okay. I guess that's all from the question answer session. I have a last question that how do you see OHEC as a USMLE source? Excellent. I think you guys are doing an excellent job. If the students can attach with you, I think it won't be any problem because you are doing uh, an excellent. Your guidance program is one of the best, and I think only staying with you, they can pass their USMLE and also MBBS. So I should say just continue this program, and I'll fully support you guys. Thank you so much, sir. It really means a lot for us. Thank you, sir. Anytime, you have any questions, just send me on WhatsApp, and I would be happy to answer. Jazakallah. Okay. Good luck to everyone. Thank you so much. Thank you, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Okay, so thank you so much, Dr. Sohail Aman, for answering our queries in such a great way. And your words and motivation will always be our greatest inspiration. We are really obliged to have you. Next, okay, so next moving in, towards the session, we have our next speaker, Rida Zara from Rawalpindi Medical University. She'll explain a bit about modular exam. Over to you, Rida. Assalamu alaikum, everyone. I'm Rida Zara from fourth year MBBS Rawalpindi Medical University, and I'm working as Director Education and Awareness here in OHEC. First of all, I would like to mention one thing that, and I congratulate you all that RMU has been ranked at the top medical university of Pakistan by the Times Impact ranking, and so congratulations for that. If I talk about continuing with the session, if I talk about the modular system and the examination pattern of RMU, as we have more students from RMU, so it will have, you can see that there are 6 modules in total that you have to give and pass separately. And these 6 modules are combined into 3 blocks, like foundation module combined with the musculoskeletal one, then 2 with the blood module, like this. Okay, all right. So these are all combined, and but auspices you have to give them separately. Auspices are combined, but modules you have to give them separately and pass them. Yeah. Can I have the next one? These all modules and the tests that are taken periodically, like after every system, you'll be having physiology viva and the terms, anatomy stages and the substages. So they all make up your internal assessment, and these are 30% of your professional exams. And this 30% makes like 270 marks out of 900 of the total, and that's a huge like huge number out of 900, I guess. Am I audible? Yes, you are. Okay, this was all like about the examination and internal assessment. If you have any other question, you can ask me. Okay, thank you so much, Rida.
So now moving towards our next speaker, we have Qasim Mahmood from King Edward Medical University. So over to you, Qasim. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Am I audible? Yes, you are. Please continue. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Qasim Mahmood and I'm a student of 4th year MBBS at King Edward Medical University, Lahore. And the topic of my discussion is how King Edward Medical University is different from other medical colleges. Next slide. This is the famous Patiala block. पता होगा ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है. इसमें कोई डिपार्टमेंट्स वगैरह नहीं है, इसमें लेक्चर्स नहीं होते. 4 वैसे लेक्चर थिएटर हैं, इसमें कभी कभी हमारे एग्जाम्स वगैरह होते हैं या बाकी लेक्चर्स होते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. बेसिकली जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस से डिपार्टमेंट है वो 3 है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री. आप सबको जैसे पता ही है. अब केई का सिस्टम डिफरेंट कैसे है बाकी मेडिकल कॉलेजेस से. केई में मॉड्यूल्स कॉन्स्टेंट ही है. जैसे एनाटॉमी के जो एग्जाम है वो लास्ट पे फुल बुक एग्जाम होगा एनाटॉमी का, फिजियोलॉजी का अलग ही होगा और बायोकेमिस्ट्री का अलग एग्जाम होगा. लेकिन हमारे मॉड्यूल साथ साथ चलते रहते हैं. जिस तरह फर्स्ट ईयर में सेल मॉड्यूल होता है, उसमें सारे डिपार्टमेंट सेल से रिलेटेड पढ़ाते हैं, इंटीग्रेटेड सारा कुछ होता है. लेकिन वो उसका लास्ट एक टेस्ट हो जाता है मॉड्यूल का. लेकिन वो उस तरह नहीं चलता मॉड्यूल जिस तरह ब्लॉक चलते हैं जैसे आरएमयू में है या बाकी यूनिवर्सिटीज में है. हमारा कन्वेंशनल सिस्टम ही है, लेकिन मॉड्यूल्स भी साथ इंटीग्रेटेड रहते हैं, तो इससे समवट डिफरेंट है फ्रॉम अदर मेडिकल कॉलेजेस. नेक्स्ट स्लाइड. सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ सेक्शन हॉल. ये ये डायसेक्शन हॉल है हमारा एनाटॉमी डिपार्टमेंट में. इसमें दूसरे मेडिकल कॉलेजेस से डिफरेंट ये है कि कई के आने वाले हर बच्चे को अपना अपना बोन बैग इशू हो जाता है. जैसे 2 बच्चे हैं, उनको 2 बच्चों के पैर में बोन बैग मिल जाता है. और जैसे मैं लोअर लिम पढ़ रहा हूँ तो गर्ल्स अपर लिम पढ़ रही होती हैं और हम एक्सचेंज कर लेते हैं. तो मतलब हर कई के बच्चे के पास अपना बोन्स का पूरा बैग मौजूद होता है. और उसके साथ साथ कई में कैडेवर्स बहुत ज्यादा होते हैं और हर बच्चे को कैडेवर्स देखने का, डायसेक्ट करने का, हर चीज करने का मौका मिलता है. और प्रैक्टिकल नॉलेज इससे आई गेस काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है आगे पढ़ने में. नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, केई में सिर्फ जो पढ़ाई के अलावा जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं, काफी ज्यादा इसमें सोसाइटीज भी हैं. जिस तरह लिटरेरी सोसाइटी इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, और ड्रामेटिक्स का अगर किसी को शौक है तो ड्रामेटिक सोसाइटी है, और डिबेटिंग सोसाइटी है, और काफी ज्यादा सोसाइटीज है. रिसर्च सोसाइटी है. और जो हॉस्टल के बारे में मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो हमारा मेन बॉयज रूम हॉस्टल है जो फर्स्ट एमबीबीएस स्टूडेंट्स को अलॉट होता है, और इसका ऑल रोड हॉस्टल है वो बेसिकली डॉक्टर्स हॉस्टल. लेकिन क्योंकि रूम हॉस्टल में बच्चे ज्यादा होते हैं, फर्स्ट ईयर के अकोमोडेट नहीं होते, तो ऑल रोड हॉस्टल में भी कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के रहते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. तो ये केक का ऊपर व्यू है, पटेला ब्लॉक है, पीछे हमारी एडमिन ब्लॉक नजर आ रहा है, और बाकी सारा व्यू है केक का. ये नीला गुम्बद का पास है. और थैंक यू सो मच. Okay, thank you so much, Qasim. So now moving towards MedAngle. It's basically an online platform that you can join and practice. Here, I just want to make an announcement that at the end of the session, we'll be having a question answer session again, and we'll be explaining you about our website, few things that are left. Along with that, 10 lucky participants will be getting 10 free 6-month subscriptions of MedAngle. So now I'll just like to invite Umar from MedAngle. He will explain to you a bit about their working. Over to you. Am I audible?
Anyone from Medingle here? Kindly continue, please. I guess our speaker just lost his internet connection. So I think we can explain about our website first, and then as he comes back, we'll get back to them. Okay, so kindly share the screen and open the website. Okay, so just go back to resources. As Dr. I just wanted to clear a few things. As Dr. Sohail said, that you should study USMLE standard books and videos and all that. So one thing that as a senior, I'll like to advise you all, okay, kindly do study the standard books. Like someone asked that which books they should study as a first year student. So मेजर बुक्स जो भी थी वो आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दी गई है कि कौन सी स्टैंडर्ड बुक किस कॉलेज में यूज होती है उसके साथ इफ यू वांट टू परस्यू फॉर यूएसएमएलई एग्जाम तो आप कैप्लन पढ़ सकते हैं कैप्लन फिजियोलॉजी एनाटॉमी and biochemistry. They are available. You can simply buy it from Prince or any shop and you can study. You can go for video lectures of Kaplan. We have uploaded all the lectures, Kaplan, physiology, anatomy, biochemistry. Same goes with Dr. Najib lectures. Then, like in short or briefly, if I say, we have compiled all the data for you. What you need to do is that you just have to log in, go to the resources pages, open USMLE. Can we open the USMLE tab, please? Kashmala, is my voice audible? Yeah, you are audible. Kindly just give me a few minutes to wind up, then you can continue. All right, perfect. Okay, so here we have all the books like Sir said, Lipin series and all that. So you can easily find those books over here. Then we have First Aid, we have Boards and Beyond, we have Sketchy, we have Kaplan, UWord, MCQ Bank. Everything has been uploaded in section for you. So I guess you are all so lucky that you'll be getting all the data in a complete and compact form. But even then, if you face any query, you can contact us anytime. We're always here for you. As you are seeing on the screen that all the data has been uploaded. Yeah, open please the biochemistry folder, please. Okay, so you can see that we have divided it into different systems like genetics, cellular, and all that. Within this, there is further sectioning going towards metabolism. Okay, there will be a complete playlist of every system. You can easily assess and will be soon providing you with an OHSC app login as well and all the MCQ bank. Here you can see that how easy and accessible it is for you. Now, next it might look simple to all of you, but those who have a bit knowledge of IT, they'll be knowing that how difficult it is to put all this in this form, and we have all just done it solely for you, and we'll be more than happy if you utilize these resources and get benefited. Here you can see that we have UWord, we have Pixelize, we have Pathoma, we have Osmosis Prime, NBME, Kaplan, First Aid, books, Sports and Beyond. And if I talk roughly about the cost of this data, then we bought all this data
when we started OHEC on 23rd March 2021. And at that time, it cost us almost 15 lakh. And being a student, it was like it's a big amount. And it was managed just by the founders and a few core team members of OHEC. And we just planned that, yeah, all the data is for you all and it's free of cost. We have almost paid 15 lakh for this. And we want that if anyone can get benefit from it, then we'll be more than happy. We have conducted different events as well. Like I'll just show you. Like we have done charity food stall in RMU. We have done different clothing drives. Right now, we are working for special children's. Like we want to promote education in them, so we'll be making 2 vocational training centers for them to make them independent citizens. We have conducted different guidance webinars before as well on USMLE and on UGRAD as well. Regarding USMLE, I'll just like to add one thing that we started our project USMLE back in April, I guess. And we had 73 registered participants with them. We completed Kaplan series. We conducted a weekly and monthly based assessments up to USMLE standard for them. Then right now it's phase 2 is in progress, and we are conducting first aid preparation session. As many students are having their professional exams these days, so there's a break, and we'll be continuing that session in late Feb again, inshallah. So if anyone of you want to join that, you are more than welcome. You can contact us anytime. Number is also shown on screen. You can contact on that number. You can email us at orghec@gmail.com. You can visit www.orghec.com. And even if you want to be a part of OHEC, then you are welcome as well. And you can just open the website. There is a join us form on that. Open that, fill it, and we'll get back to you as soon as possible. I guess that's all. Now we should wrap it up. Going back towards the presentation, I like to invite Umar for explaining a bit about MedAngle, and kindly stay in the meeting as we'll be announcing 10 lucky participants' names in the meeting. Will be getting free subscription. Thank you, and over to you, Umar. Assalamu alaikum, Kashmala. Thank you so much. Is my voice audible? Yeah, you are audible. Okay, assalamu alaikum, everyone. My name is Umar Hayat, or I'm one of the medical students all over from Karachi. And it's actually really amazing to see all of you here from different medical colleges. आप लोगों में से कुछ RMU से हैं, कुछ Fatima Jinnah, King Edward, various medical colleges. I'm really happy to see you. And I think this part of the session is, I think आप लोगों के लिए it's very important. और वो इसलिए because अभी थोड़ी देर पहले ही Dr. Sohail was talking about कि किस तरह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि एक ऐसी चीज है जो कि USMLE में आपसे पूछी जाती है, लैब में पूछी जाती है, इतनी जगहों पे पूछी जाती है. ये एक ऐसा टेस्टिंग आई वुड से एक असेसमेंट पीस है जिसमें आपको अच्छा होना लाजमी है इफ यू आर इन मेडिसिन एंड इफ यू आर परस्यूइंग मेडिकल करियर. एंड आई थिंक दैट्स वेयर MedAngle comes in, और this is our name, MedAngle, the future of medical intelligence. Now मैं आपसे अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 2 से 3 मिनट लूँगा ताकि मैं आपको सही तरह बता सकूँ कि how you can use MedAngle actually, कि जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं लिपिन कॉर्ड से, जो इतनी डिटेल्ड बुक्स हैं और बहुत अच्छी बुक्स हैं आई वुड से, लेकिन दे आर वेरी हार्ड टू मैनेज. सो जो इंफॉर्मेशन आप इन सारी बुक्स से सीखेंगे, लर्न करेंगे, हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट दैट? I think that is what you'll be seeing in MedAngle. So please next slide. So once again, assalamu alaikum everyone, and the problem that we face as students, and आप लोग अभी अपना pre-med का exam देके आ रहे हैं, inshallah you're just getting yourself enrolled in medical college, you should know कि being a doctor in today's world is really hard. It's बहुत जो process है, it's very overwhelming और complex है. जो आपकी environment होती है medical school में, आपके साथ जितने भी students होंगे, everyone wants to get better. हर कोई अपने आप को और ज़्यादा नुमाया करना चाहता है दूसरे इंसान से.
And I think that's where Medangle comes in. Next slide, please. Medangle is the only platform in the whole world right now जिसमें हर तरह का क्वेश्चन हर तरह के टॉपिक के लिहाज से आपकी आसानी के लिए और आपकी कन्वीनियंस के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है और वो मैं आपको अभी दिखाने भी वाला हूँ किस तरह. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये हमारे कुछ फीचर्स हैं. आप देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, योर मेन असेसमेंट पीस. उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले देयर वाज प्रोफेसर्स एज वेल इन दिस सेशन जिन्होंने काफी आउट से एक अमेजिंग अंदाज से बताया कि जो पेपर पैटर्न किस तरह होता है. देयर इज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, एमसीक्यू के क्वेश्चंस होते हैं, मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस आपके पास मौजूद होते हैं. तो मेडैंगल एक ऐसा पीस है आउट से जो आपके मेडिकल स्कूल में हर उस पॉइंट पे टारगेट करेगा जिसमें यू हैव टू गेट बेटर और आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो आप नॉलेज बुक्स और हर प्लेटफॉर्म से वीडियो लेक्चर से अगर आप सीख रहे हैं वो इंफॉर्मेशन सिर्फ याद नहीं बल्कि इम्प्लीमेंट भी करनी है. Excuse me. Yes, Kashmala. There's a bit distortion in your voice, but it's clear now. Continue. All right. I'll continue. Okay, I'm very sorry about the voice. Okay, so इसी के साथ these are a bit of features. Now I'll share my screen with all of you ताकि मैं आपको real time सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपको मैं proper tour दे सकूं कि how our website actually looks like. So Kashmala, if you would let me share my screen. Thank you so much. Yeah, sure. Kashmala, can you see my screen? Yeah, we can. Okay, everyone. So this is Medangle. This is the front page, the cover screen of our platform. As you can see, very colorful. It's very interactive. आप लोग जैसे देख सकते हैं कि जो जितने भी YouTube channels हैं, जितने भी आउट से video resources हैं, all of them are really nice. They're really nice. लेकिन the problem actually is कि उनको on a daily देखना और उनके साथ अपना पेस बरकरार रखना गेट्स वेरी मोनोटनस. इंसान को बोरियत होती है. So this is where you can actually come and test your knowledge, and this is Medangle. As you can see, this is our front page. It's a really colorful, it's a really nice page. Inshallah, by the end of this live session, आपको free subscription भी मिलेंगे. We have placed 10 free subscriptions for Medangle, which are going to be given to any of the 10 people who are here in this live, ताकि आप लोग इसको और बेहतर तरीके से access कर सकें. But those of you who will eventually not get a subscription, आप लोग हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं. राइट नाउ एज आई स्पीक आप लोग अभी भी अपने सेल फोन पे हमारी वेबसाइट खोल सकते हैं एंड चेक दिस वेबसाइट आउट. वी हैव फ्री क्विजेस ताकि आप लोग जो भी आपकी मर्जी का टॉपिक है, जो भी आपकी मर्जी का मॉड्यूल है, आप उसको विजिट कर सकते हैं. दिस इज द डैशबोर्ड. यहाँ से आपका मेन एडवेंचर शुरू होता है इन Medangle. एज यू कैन सी इट्स कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू योर ओन पर्सनल प्रोफाइल. ये मेरी अपनी पर्सनल प्रोफाइल आपके सामने आ रही है. आप मेरी पिक्चर देख सकते हैं. ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर मेरा नाम भी आ रहा है और अभी मैंने अपनी यूनिवर्सिटी रावलपिंडी मेडिकल सेट की हुई है क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही हमने बहुत एक इम्पोर्टेंट गुफ्तगू की थी जिसमें हमने बहुत डिस्कशन किया था कि UHS नम्स हर सिस्टम के अपने लिहाज से अपने अलग अलग क्वेश्चंस पूछने के तरीके होते हैं और उनका क्वेश्चन बैंक होता है. तो यहाँ पे Medangle किस तरह आता है, यहाँ पे Medangle किस तरह हेल्प कर सकता है, दिस इज द वेरी वाइटल पॉइंट ऑफ दिस लाइव सेशन और मैं आपको दिखाने वाला हूँ. अगर आप लोग हमारी इस Medangle की स्क्रीन पे आएंगे एंड इफ यू क्लिक ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आप देखेंगे विद इन मिलीसेकंड एक ब्रांड न्यू पेज लोड अप होगा विच इज कस्टमाइज्ड एंड पर्सनलाइज्ड RMU के लिए. And not just for the students of RMU. हमारे इस लाइव सेशन में अगर कोई फातिमा जिन्ना से ताल्लुक रखता है, अगर कोई अलामा इकबाल से ताल्लुक रखता है, कोई किंग एडवर्ड से ताल्लुक रखता है, हम आपके कॉलेज के लिहाज से, आपके करिकुलम और आपके स्टडीइंग पैटर्न के लिहाज से हम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. And this is what it actually looks like, the live feature on our Medangle site. Kashmala, is the live still going on? I think some people are saying that the live is not happening. Yeah, it's live. Okay, I think वो बीच में live cut हुआ था. Okay, I think we're back. Okay, so this is once again everyone, ये हमारा रावलपिंडी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए हमने once again Medangle जिस मेडिकल यूनिवर्सिटी में आता है, जिस मेडिकल कॉलेज में आता है, जिस
मेडिकल सिस्टम में आता है, भले वो यूएचएस से ताल्लुक रखता हो, वो इंडिपेंडेंट हो, वो नम्स का हो, वो कराची का हो, या वो किसी और सूबे का हो, we will be there for you, we will be helping you out with आपको अपना करिकुलम. As you can see, यहाँ पे हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हुई है. There's the foundation module, उसके multiple subjects हैं. और फिर अभी कुछ देर पहले some of you talked about upper limb, lower limb, about the dissection, about the bones. तो ये कुछ हैं. And then once again your biochemistry and all the other related things जो कि first year में आपको experience करनी चाहिए, आपको पढ़नी चाहिए. It's all available and the same will be followed for second year, third year, fourth year, and then inshallah final year as well. And we will not stop here. We will not stop with your journey. We will even continue after final year with giving you step 1 content, the NLE content. NLE बहुत नया अभी announce हुआ है. People are starting to appear for the NLE exam. तो इंशाल्लाह जब आप लोग NLE exam देंगे तो it will help you over there as well. और सिर्फ ये नहीं, डॉक्टर सोहेल ने अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी अपने सेशन में, दैट USMLE जो लोग अमेरिका जाके अपनी रेजिडेंसी लेना चाहते हैं, वहाँ पे मेडिसिन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, देन स्टेप 1 का आपके पास भी तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए. बिकॉज वंस अगेन एवरीवन, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, एंड आई थिंक बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट माई सेल्फ, ये मैंने खुद भी अपने लिए एक्सपीरियंस किया है और मैं आपको ही बता रहा हूँ कि नो मैटर हाउ मेनी वीडियोज यू वॉच इन अ डे, no matter how many chapters you read in a book, एक दिन में आपके पास दिन के इख्तिताम पे एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिस पे आप अपनी वो सारी पढ़ी हुई और सुनी हुई और देखी हुई नॉलेज को अप्लाई कर सकें. एंड मेड एंगल गिव्स यू दैट इज द मैजिक, दैट इज आई वुड से द मैजिक पॉइंट जो आप लोगों को अपने मेडिकल स्कूल के पहले दिन से अप्लाई करना चाहिए. डॉक्टर सोहेल ने भी ये बात अपने सेशन में की और मैं इसका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ. So there's that. मैं कुछ क्वेश्चन खोल के दिखाना चाहूँगा, ज़्यादा टाइम once again नहीं लूँगा और कुछ क्वेश्चन लूँगा. Let's just go for bones of the upper limb. इंशाल्लाह जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे, you will see questions like these. As you can see, the question is really nice. काफ़ी detailed है. It's not a one-liner, it's not a two-liner question. काफ़ी proper detailed है, with proper vocabulary, with proper punctuation, और कुछ नीचे options दिए हुए हैं. आप इन ऑप्शंस पे क्लिक करते जाइए. अगर आप गलत करेंगे ये आपको बोलेगा इट्स रेड, इसका मतलब गलत है, लेकिन आपको ये आंसर नहीं बताएगा क्योंकि हमारा सिस्टम चाहता है कि आप सीखें. अगर आप गलती करते हैं कोई मसला नहीं, आप सीखें. अगर आप गलती यहाँ से करके जा रहे हैं तो दिन के इख्तिताम पे योर गोल इज टू लर्न. एंड इंशाल्लाह जैसे ही आप सही आंसर पे क्लिक करेंगे, ब्रांड न्यू स्क्रीन ओपन्स अप. आप देख सकते हैं देयर इज एक्सप्लेनेशन ऑन द टॉप, मिडिल में डायग्राम्स भी हैं, एनोटेशंस भी हैं, लेबलिंग्स हैं, और ऑन द बॉटम हमने रेफरेंस भी दिया हुआ है ताकि अगर आप यही सेम चैप्टर अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ना चाहें, उसका पेज नंबर, उसका एडिशन, एवरीथिंग इज मेंशन्ड फॉर यू. आपको अगर आपके पास ग्रेज एनाटॉमी है भी नहीं, इवन देन यू कैन चेक दीज डायग्राम्स, दीज एनोटेशंस आउट, एंड इट विल हेल्प यू अलॉट इन योर मेडिकल स्कूल. बिकॉज आप अपने कॉलेज की पॉइंट में हो सकते हैं, हॉस्टल में हो सकते हैं. कभी कभार ऐसा होता है कि वेदर खराब है, बारिश हो गई, आपने खाना खाना है, लेकिन आपके हाथ में आपका फोन जब तक है, your learning will never stop. It's a go-to mode for you, without any hassle, without any, I would say, sort of inconvenience for you. And that is once again another magic for Medallion. So मैं इसको क्लोज करूंगा और मैं डैशबोर्ड पे वापस जाऊंगा और कुछ फाइनल चीजें दिखाना चाहूंगा. वैसे तो बहुत फीचर्स हैं यहाँ पे, मैं आपको सारे फीचर्स दिखाना चाहता हूँ, लेकिन आई विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड OHSC का टाइम. तो मैं एक फाइनल फीचर दिखाऊंगा, एंड दैट इज के आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने सवाल तो कर लूंगा, 3000, 2000, 4000, जितने भी सवाल है मैं कर लूंगा, जितने भी क्वेश्चन हैं, लेकिन वो क्या फीचर है जो ट्रैक कर रहा है इसको. हाँ, मुझे कैसे पता कि मैं कितने सवाल कर रहा हूँ, और अगर मैं कर भी रहा हूँ तो मैं इम्प्रूव हो भी रहा हूँ या मैं सिर्फ ब्लाइंडली क्वेश्चंस कर रहा हूँ. वी हैव अ फीचर कॉल्ड माय परफॉर्मेंस. ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल है. इट्स टेलिंग मी माय ओन क्वेश्चंस. 3248 क्वेश्चंस मैंने किए हैं अभी तक टुडेस डे में. 2 साल से मैं डैंगल इस्तेमाल कर रहा हूँ. जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था मैंने साइन अप किया था, और अभी मेरा थर्ड ईयर इंशाल्लाह खत्म होने वाला है और मैं अभी तक यूज कर रहा हूँ. और इट टेल्स यू योर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपने किए हैं, आपके सब्जेक्ट्स, आपकी डेली एक्टिविटी. जब मेरे एनुअल एग्जाम्स होते थे, आप देख सकते हैं मेरी डेली एक्टिविटी राइजेस अप बहुत ज्यादा, और नीचे सब्जेक्ट वाइज क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, योर राइट रॉन्ग रेशियो, एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर. एंड इस पूरी बात का खुलासा ही है बेसिकली कि MedAngle wants you to learn once again. क्योंकि बात वही है कि no matter how many books you're reading, guys,
Trust me, no matter how many books, how many diagrams, how many research articles you're reading, आपकी जो natural memory है वो decay करती है over certain time period, and you need to implement that knowledge before वो आपके mind से चली जाए. And with the power of mid angle, कि जो आपकी अपनी यूनिवर्सिटी के लिए अडेप्ट करता है, आपकी अपनी यूनिवर्सिटी के लिए कस्टमाइज्ड है. अभी मैंने आपको रावलपिंडी का दिखाया है. अब जो हमारे लाइफ में वंस अगेन मैं कह रहा हूँ, जो दूसरे स्टूडेंट्स होंगे, फातिमा जिन्ना के, किंग एडवर्ड के, अलामा इकबाल और भी दीगर मेडिकल कॉलेजेस जहाँ से भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि मिड एंगल आपकी यूनिवर्सिटी के लिए एग्जिस्ट करता है, आपकी यूनिवर्सिटी के नाम के साथ, करिकुलम के साथ. और अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के हैं, यू कैन लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट राइट नाउ स्टार्टिंग टुडे, मेक योर अकाउंट, एंड यू कैन एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दिस विदाउट एनी हैसल. So with that said, thank you so much everyone. This was my short presentation for all of you. और फाइनल वर्ड्स मैं यही बोलना चाहूँगा, जो मेरे फाइनल लफ्ज़ हैं, जो कि मैंने खुद सीखे हैं while being a medical student myself, guys, के और एक बात डॉक्टर सोहेल ने बोली कि guys, start studying from day one. Start studying from day one, because if you do not implement these strategies from day one, then at the end of the day, you're going to face a lot of your difficulty. So, guys, thank you so much for joining in. This was Mid Angle. My name is Umar Hayat. Bahut shukriya. And Kashmala, you can take it over from here. Okay, thank you so much. Okay, so you all have heard about MedAngle. It's really an excellent platform. I'll just like to add a few things that I can say on the basis of my experience or whatever Dr. Sohail said. We had a great conversation in this meeting with him as well, and before this meeting, we discussed few things with him. I'll just like to add that MCQ करना ठीक है, it's too important. आप MCQ practice करो, but जो आपकी basic चीज है फर्स्ट ईयर में के स्टार्टिंग में कि क्लियर योर प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, तो एक चीज जो मैंने नोट की थी कि आपका कॉन्सेप्ट नहीं है, आप एमसीक्यू को गलत सॉल्व करोगे. जब आप उसको गलत सॉल्व करोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा शैटर होगा. सो उससे बेहतर है कि आप पहले अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, इतना स्ट्रॉन्ग करो कि जब आपके सामने एक सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू आता है तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो. और वन थिंग मोर दैट सर सोहेल ने भी कहा कि एमसीक्यू आप कौन से प्रैक्टिस करो, मेडिकल की आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं. इसके अलावा आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, यूएसएमएलई के स्टैंडर्ड के एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करें, ताकि आगे जाके वो आपके काम आए जो कि सिनेरियो बेस्ड हो. इस पे आई जैसे कि ओएचईसी की वेबसाइट पे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, काफ़ी चीज़ें रह भी गई एज वी वर शॉर्ट ऑफ टाइम, तो आप उसको विजिट करके देख सकते हैं. आपको वहाँ पे यूवर्ड के एमसीक्यू कुछ मिलेंगे, दे आर वेरी गुड, दे आर अप टू द यूएसएमएलई स्टैंडर्ड. And still further, and yes, we'll be having a session with you, a live interactive session in RMU as well with RMU students, because as we are from RMU, so we'll try के जैसे ही हमारा प्रॉफ अभी रिटर्न हुए हैं, हम वाई एंड ऑस्पिस से जैसे ही फ्री होंगे तो we'll visit you guys soon in OTP and we'll have a session there जहाँ पे हम आपको फर्दर गाइड करेंगे. बट अभी के लिए टेक होम मैसेज जो मेरी तरफ से है आपके लिए वो यही है कि go to the website www.orghec.com. वहाँ पे आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे. उन लेक्चर्स को डे 1 से अपने लेक्चर्स के साथ साथ सुने, उसको अपनी एक हैबिट बनाएं और अपने कॉन्सेप्ट्स को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपको इर्द गिर्द कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े. आपके पास इतना नॉलेज हो कि एक चीज आपके सामने आ रही है तो आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो कि वो कैसे, क्यों और किस तरह. That's all from my side. I guess now we'll proceed toward a question answer session. Kashmala, I just want to add one thing, if you would allow me to, just one last thing. Yeah, sure. All right, guys, I'm back. Umar again here. मैं बस आपको एक लास्ट चीज़ बोलना चाहूँगा, जो अब जब भी कश्मला ने बहुत अच्छी बात की और मुझे उन्हीं की बात से याद आई और मुझे पहले बयान कर देनी चाहिए थी, बट
It slipped my mind. लेकिन कशमला ने बहुत अच्छी बात की कि first build your concept और उसके बाद do the MCQs ताकि आप demotivate ना हो. Lekin, as part of my personal experience and the people here who actually made Medangle, we personally think कि आप सारी videos देखें, do whatever you can to make your concept the strongest. लेकिन जब आप सवाल गलत करें ना, do it with a mindset कि अगर आपने आज ये गलती की है, आप एग्जाम में ये गलती नहीं करेंगे. बिकॉज जितनी गलतियां आज आप अपने घर में बैठ के कर रहे हैं, अपने अपने खुद के लैपटॉप पे, अपने खुद के मोबाइल पे, दैट्स बेटर. आप जितनी गलतियां अभी करेंगे, आप उतना ही ज्यादा सीखेंगे और इंशाल्लाह जो सवाल आप अभी गलत करेंगे वो आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि मैंने ये गलत किया था और इससे मैं डिमोटिवेट होने वाला था लेकिन मैं नहीं हुआ था, क्योंकि आई नो माई सेल्फ कि आई कैन गो इवन बियॉन्ड और मैं जितनी ज्यादा गलतियां करूंगा मैं उतना सीखूंगा. सो आई थिंक मेडिकल स्कूल में this is one thing that is very important, and that is keeping a positive mindset. So inshallah, yes, do focus on videos, do focus on building your concept. लेकिन जब आप कोई भी question bank try करें, whether it's on OHEC की website, it's medangle.com, whatever it might be, गलत करने से ना डरिए. और मैं तो कहूँगा जितना गलत कर सकते हैं करें, क्योंकि अगर आप लोग अपने आप को एनालाइज नहीं करेंगे तो आपके लिए कोई है नहीं जो आपको आगे बता सके कि आप ये गलती कर रहे हैं. You're on your own, and that's why I think we're having this guidance session at the end of the day. So yeah, that's just one thing I wanted to add, Kashmala. Thank you so much. Thank you. Okay, now we'll be proceeding towards the question answer session, and I'll just like to add one more thing, that you don't need to buy any subscription right now. Like if you need an Achieve subscription or anything like that, you can just contact us and we'll be providing you with all the data free of course, so you need not to have spend money regarding all this. And now I'll like President OHSC Danish Ali to continue with the session, please. She is here in the meeting.
Okay, I'll be sharing. I'll be sharing it in the group. I guess we should proceed with the question that we received. So we had a question that what things are necessary that we need to have with us on our very first day in a medical college. Someone asked that RMU hostel has informed that there will be no slot till April. So is there any accommodation near to it that they can opt for? But I guess they should reconsult the administration because they usually do provide hostel service to all the students. Okay. Someone asked about which books they should study, keeping in mind the USMLE stuff and all. So I guess that's already answered. Or if you want to. There are a few queries about research as well. So I like if you kindly share a few details about OHEC Research Forum with them.
Okay, Can I add to I'll. it? Yes, ma'am. Sure. Regarding research, basically you will be having RMU has a unique feature that they have introduced a research curriculum right from first year till final year. Definitely, OHEC will definitely guide you regarding that, and they will conduct. I hope that they will be conducting, as Danish said, that they will be conducting a series of research, and you will be knowing all the ABCs of the research, and you will be performing the research in practical. But definitely, once you will enter RMU right from the first year, you will get the curriculum of the research. You will know about all the know-hows of the research, what and how you are going to conduct it. You will get the topics as well, and rest regarding any kind of queries regarding research. Definitely, different organizations, different platforms will guide you. But I guess that the sole thing is that you should be consulting your teachers as well. uh, do keep in loop your teachers, because they are the best guides, and definitely your seniors who have gone through all the research curriculum and practically they have researched the articles. So get in touch with them. They are the best guides for you. Okay. Thank you, ma'am. We got. Mhm. Thank you, Danish. Someone. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Also, someone asked to best books for RMU students. So I think that had been answered. लेकिन इसको shortly मैं दोबारा बता देती हूँ. For anatomy, you have to study KLM, embryology. KLM embryology RMU में लैंग में नहीं पढ़ते, हम mostly KLM embryology पढ़ते हैं. Then for general anatomy, there's also Lycosan, histo भी हम Lycosan से पढ़ते हैं. For physiology, Guyton and Hall, and Sherwood से कुछ topics and a few topics from Mushtaq physiology. Biochemistry की दो standard books हैं, Satya and Lippincott. और उसके साथ मुश्ताक से कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं. So I guess you just need these books. And one thing more, please don't go for short books from the start. Main books पढ़ें ताकि आपके concepts clear हो. Danish,
बेटा जी बात ये है कि बुक्स आप लोगों ने जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं आप लोग डेफिनेटली उसकी तरफ जाओ। अभी दानिश ने कहा कि फिरदौस है फिजियोलॉजी की, पढ़ें जरूर, छोटी किताबें पढ़ें। जैसे कि इन्होंने कहा है कि वो एग्जाम्स के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ही नहीं बने होंगे ना, तो बिलीव यू मी, ये फिरदौस, ये छोटी किताबें, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। बात है कि आप लेक्चर्स अटेंड करें होली, अपने दिमाग को खोल के। और सीनियर्स में बेटा आपके जो टीचर्स हैं ना, दे आर द मोस्ट सिंसियर सीनियर्स टू यू। तो आप कोशिश करें कि टीचर्स की बात सुन के चले। हाँ, बहुत अच्छे सीनियर्स भी हैं आपको जो बहुत अच्छा भी गाइड करेंगे, लेकिन बेटा जी वो बात आपकी किताब और आपकी टीचर लेक्चर के दौरान बता रही है, वो आप इसमें से छोटी किताबों से आपको नहीं पता चलेगी। सो प्लीज प्लीज स्टिक टू योर बुक्स, स्टिक टू योर लेक्चर्स, लिसन टू योर टीचर्स व्हाट दे आर सेइंग, क्योंकि जो उनका एक्सपीरियंस है एग्जाम भी उन्होंने ही लेना है। तो जो उनका एक्सपीरियंस है उसको आप बीट नहीं कर सकते कहीं पे। बीच में बहुत सारे क्लूज टीचर आपको पढ़ाते हुए ऐसे देता है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें इसमें वाइवा में पूछी जाती हैं, उन चीजों को लिख के रखो अपने पास। और यकीन करो कि आपका एग्जाम पास करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगी। स्ट्रेस वही होती है जहां आप लोगों सीनियर्स की बातों में आके आप लोग लेक्चर्स मिस करना शुरू कर देते हो, अटेंशन नहीं देते हो, और उसके बाद आप लोग जो है ना शॉर्ट किताबों की तरफ आ जाते हो, वहां से स्ट्रेस बिल्डिंग स्टार्ट होती है। वही पॉइंट है कि जहां पे आप लोग मार खाते हो, हम मतलब अपने इर्द गिर्द से गलत बातें प्रूव करके। Okay. LM भी पढ़ सकते हैं। Good. वी विल ट्राई डेफिनेटली। मैंने करिकुलम बनाया हुआ है कि हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी स्किल लैब का जो आपको कॉन्सेप्ट है ना वो हम आपको दें। उसमें कुछ चीजें हैं जैसे बेसिक लाइफ सपोर्ट है, बेसिक फर्स्ट एड का जो कोर्स है वो कि अगर मतलब थ्रू आउट करिकुलम ना चल सका ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, तो एक एक दो दो दिन का कोर्स करवा के हम फर्स्ट ईयर में कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बेसिक्स पता चल जाए कि खुदा ना खास्ता आप घर पे हो, कोई अल्लाह ना करे कोई छोटा मोटा हादसा हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, कोई मतलब बर्न का हो जाता है छोटा मोटा केस, तो आप लोग हैंडल कर सको। ये मेरी कोशिश है। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट।
बिल्कुल बात ये है बच्चे कि मैंने आपको शुरू में ही एक बात बोली थी कि यू आर बीइंग ब्लेस्ड टू बी चोजन एज अ मेडिकल स्टूडेंट एंड बीइंग अ डॉक्टर। सिर्फ एक दफा एंट्री हो गई है, 5 साल की बात है एंड यू विल बी अ डॉक्टर। आप लोग थर्ड ईयर में जाओगे, जब स्टेथ गले में लटकाओगे ना और ओवरऑल पहन के जब आप फर्स्ट डे वार्ड में जाते हो, यकीन करें कि अपना आप हवा में महसूस होता है। जब लोग आपको डॉक्टर साहब कह के बुलाते हैं ना, तो और बंदे का मोरल बूस्ट होता है। लेकिन इस सब के लिए मेहनत चाहिए। एवरी सक्सेस नीड्स अ हार्ड वर्क, इट नीड्स सेक्रीफाइसेस। बहुत सारी जगह ऐसी आएंगी कि आपको चूज करना पड़ेगा कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज नॉट। बी अ मैन फॉर योर सेल्फ। दूसरों के बॉल, जैसे दानिश ने कहा कि कोर्ट में, दूसरों के कोर्ट में बॉल मत फेंके, अपनी बॉल और अपना बैडमिंटन का रैकेट और अपना जो वो है ना शटल, उसको अपने हाथ में रखें। कोशिश करें यू प्ले फॉर योर सेल्फ, डोंट लेट अदर्स प्ले फॉर यू। कोई बात है, खुद जाके डायरेक्ट टीचर से करें। सीआर डेफिनेटली आपके होंगे, आप उनको कन्वे करें, वो दे आर द बेस्ट पीपल ओवर देयर। बट इफ यू थिंक दैट दे आर नॉट बीइंग हर्ड एंड यू हैव अ जेन्युइन रीजन, गो टू द टीचर्स, टॉक टू देम। आई थिंक बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत ओपन टीचर्स हैं, दरवाजे हर वक्त खुले हुए हैं, राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर टिल फाइनल ईयर। हर टीचर के डेफिनेटली हर किसी का मिजाज डिफरेंट है, लेकिन ओबीडियंस इज द की टू सक्सेस। we were very obedient to our teachers, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम जाते हैं तो हमारे टीचर्स हमें याद रखते हैं। तो बच्चे बेटा याद रखो, जब आप माँ बाप के ओबीडियंट हो तो माँ बाप को वही बच्चा पसंद आता है जो बहुत ज्यादा ओबीडियंट होता है, वो बात सुनता है, जो गलत कामों में नहीं पड़ता। बात बिल्कुल उसकी ठीक है कि एक दफा एक स्टेप स्लिप नहीं हुआ एंड द कैस्केड ऑफ ruining योर दिस होल जर्नी विल स्टार्ट। एक गलत कदम और आपकी पूरी, और जो आपके पेरेंट्स ने, आपके रिलेटिव्स ने बहुत सारी उम्मीदें आपसे बांध ली हैं अभी से। सो ट्राई टू प्रूव योरसेल्फ। आपकी एक एक गुफ्तगू, आप एक जो कदम बेटा, वो ये बताता है कि आप किस फैमिली से आए हो। आपकी माँ बाप कभी अपने माँ बाप की तरबियत पे उंगली उठने नहीं देनी। ये अगर आज आप तहैया करके कॉलेज में एंटर होगे ना, यकीन करो कि जिंदगी 5 साल सुकून से गुजरेगी। आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। मैं खुद इन चीजों को इंडोर्स करती हूँ कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए और हम करवाएंगे भी। ये हमारा वादा है आप लोगों से। होगा भी, सारा कुछ होगा, लेकिन सब कायदे कानून के तहत अपने हदूद में रह के करें, ठीक है? Yes. Thank you, ma'am. Okay, I'll just like to add one thing here. कि अगर मेडिकल कॉलेज में आप ज्यादा पढ़ते हो तो उस चीज को भी आपके लिए प्रॉब्लम बना दिया जाता है। लाइक लोग बातें करते हैं, उनका काम है बातें करना। सो प्लीज जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल और उस चीज से डीमोटिवेट होकर पढ़ना ना छोड़ें। बिकॉज मैंने बहुत से लोग देखे हैं जिन्होंने सिर्फ इस वजह से अपनी इंटरनल्स खराब किए हैं कि लोग कहते हैं ये हर टाइम पढ़ता रहता है या ऑल दैट। सो कीप दैट इन माइंड। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब आ रही है आवाज? जी अब आ रही है। अच्छा, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मेडिकल कॉलेज में अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं ना, तो उस चीज़ को भी कुछ लोग आपके लिए एक प्रॉब्लम बना देते हैं। बट उस चीज़ से डीमोटिवेट होके अपना करियर ख़राब ना करें। बिकॉज मैंने पर्सनली बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने सिर्फ इस चीज़ से डीमोटिवेट होके पढ़ना या अपनी इंटरनल ख़राब की है कि लोग कहते हैं कि वो हर टाइम पढ़ता रहता है। सो लोगों का काम है कहना, वो खुद भी पढ़ते होंगे। आपका काम है, आप यहाँ पढ़ने आए हैं, पढ़ें। और अच्छा बेटा, यू एक आर चीज मैं रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू डू। इंटरनल असेसमेंट बेटा आपकी 30% वेटेज है, मीन 90 मार्क्स इन एवरी ब्लॉक। कश्माला एंड दानिश, यस मैम। आई गेस देयर इज सम क्वेश्चन। मेरी तो ऐसे है कि इंटरनल असेसमेंट को कभी हाथ से नहीं जाने देना। जहाँ इंटरनल असेसमेंट खराब हुई नहीं, वहाँ आप लोगों का हिसाब किताब गड़बड़ हुआ नहीं। तो अपने फोकस रखें कि आपकी इंटरनल असेसमेंट बहुत अच्छी जाए। आपके ब्लॉक्स के मार्क्स, आपके ऑफिस के मार्क्स, आपके वाइवास के मार्क्स लग के अपने ब्लॉक के लिए पढ़ना है, मॉड्यूल के लिए पढ़ना है, ठीक है? यस। थैंक यू मैम। Okay, I guess is MBBS from Pakistan accepted in Dubai, or there is a test for Pakistani doctors who want to go in Dubai? Okay, there are variable opinions. Like there are some
Yes, the research complex is being built in RMU. It has started, and inshallah, it will have a great impact. But initially, it is for the MPhil and PhD students, because now our RMC is now RMU. So when a university is made, it has its postgraduate trainees as well. So initially, it will be for MPhil and PhD. So जहाँ से आप लोग निकल के अगर जो डायरेक्टली जो लोग हाउस जॉब के फौरन बाद MPhil करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं in any of the basic sciences, even I think students will sooner or later they will get a chance as well, क्योंकि जब एनिमल हाउस बनेगा और रिसर्च मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च बेसिकली वो यूनिट बन रहा है, और CTU भी बन रहा है, क्लिनिकल ट्रायल यूनिट भी बन रहा है RMU में. सो ये बहुत सारे एजेस हैं जो RMU के स्टूडेंट्स को मिलेंगे. तो डेफिनेटली इट विल वर्क लाइक एक मिरेकल के तौर पे काम करेगा आप लोगों के लिए, बिकॉज यू विल बी द ब्लेस्ड वन कि आपको बहुत अर्ली रिसर्च की चीज़ों का और मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च के बारे में पता चलेगा. तो डेफिनेटली इट विल हैव अ वेरी गुड इम्पैक्ट. That's very simple, so easy. Very I guess that's all. okay. For Are further you done with the queries, forms? for further queries, they can contact us and we'll get back to them. Yes, the groups have been made, and you can contact us directly, and we'll be more than happy to guide you through all And these processes. for 10 lucky participants who will be getting free subscription of Medical, we'll be informing them in their inbox, inshallah. Okay, thank you so much, everyone, and thank you so much, Ma'am Maya, once again for joining us. Thank you so It much, was ma'am. very Most welcome. Stay blessed, Thank happy, you. and I welcome all my RMU students to RMU. And thank you, Danish Kashmala. You did a great job, and the Mbbs society is blessed, and may the all rise and shine. Thank you so Amen. much, Thank ma'am. you, Thank you ma'am. so much once again. Allah Hafiz, beta. Take care. Allah Love Hafiz. love Thank you so much, And everyone, for joining. See you guys soon at IMU yeah, and other ones online. Yes, thank you so much once again. Stay blessed. Allah. inshallah. And at the end, again, we are thankful to Dr. Sohail for joining us because he's really a great mentor for all of us. Thank you so much, sir, once again. Thank you so much. Allah Hafiz. Subscription